अगर आप स्पेसिफिकेशंस एक सेकंड के लिए भूल जाए ना तो इट्स लाइक डेजा वू, यानी कि इट हैज़ हैपेंड बिफोर, वो वाली फीलिंग आएगी आपको। 2014 में एक नई कंपनी आई कॉल्ड वन प्लस और उन्होंने चैलेंज किया टू द बिगेस्ट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड एंड टू देयर सुपर फ्लैगशिप फोन्स बाय ऑफरिंग उन्हीं के स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल एग्जैक्ट, समटाइम्स इवन बेटर एंड एट अ शॉकर ऑफ अ लो प्राइस। एंड देन दे शॉक द वर्ल्ड सो मच कि वो खुद ही एक हाउस होल्ड नेम हो गए। OnePlus was called the flagship killer. Then they became such a heavy household name कि उन्होंने डिसाइड किया कि यार फ्लैगशिप किलर छोड़ो, हम लोग फ्लैगशिप ब्रांड बन जाते हैं and started releasing phones first at 30, फिर 35, 40, now even at 50 and 55,000 rupees. But with their new release, the OnePlus Nord, OnePlus is back to that price point जहाँ पे उनकी जर्नी शुरू हुई थी as a flagship killer. I mean, it's been years since OnePlus has launched anything with the price starting from the numerical 2. Yes, the Nord starts at 24,999 rupees, but the excitement drops a bit as soon as I try to remind you of the specifications that I just asked you to forget. So the OnePlus Nord is not an attempt to become the next flagship killer. ये flagship killer बनने की कोशिश कर भी नहीं रहा है। ये एक ऐसा attempt है to offer the OnePlus experience, OnePlus name, OnePlus aura, the OnePlus aspiration that many people have to buy and own a OnePlus, लेकिन मिड रेंज स्पेसिफिकेशंस के साथ। देखिए, इट्स अ सॉलिड, वेरी वेल बिल्ट फोन, लुक एंड फील, फिट इज वेरी मच OnePlus. Look at this color, absolutely beautiful. The current line of smartphones that are very, very good looking from OnePlus, this is right there. It runs on a Snapdragon 765G, जो कि एक फैंटास्टिक प्रोसेसर है considering ये परफॉर्मेंस देता है, and it offers it at a very, very good price point. Then as always, जैसे OnePlus हमेशा करता है, you have lots of options for RAM and storage. 6GB है, 8GB है, 12GB RAM option है. But yes, these are LPDDR4X units for storage. 64, 128, 256GB option, but these are UFS 2.1. लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है. I expect it to be like that in mid-tier priced phone. Screen बहुत ही अच्छी है, fluid AMOLED, 6.44 inches with a resolution of 2400 by 1080 pixels. Refresh rate 90 Hz. Protective layer of Gorilla Glass 5 also. बहुत अच्छी बैटरी है इसमें, 4115 mAh की. Charging experience is very, very pleasant. Comes with warp charging 30T adapter. But most of the focus by OnePlus is on their camera unit. OnePlus made quite a noise about offering a much superior photography experience in a budget price range. And they are absolutely right about it. Main 48 megapixel camera is very, very good. 8 megapixel इसका ultra wide lens is very, very helpful. And बाकी lenses also are very, very good. And then front में इन्होंने डाली हैं 2 lenses which also work very, very well, especially video conferencing के लिए भी. लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या है? जब मैंने बिल्कुल शुरू में आपको सबसे पहले जो OnePlus फ़ोन आया था, एग्जाम्पल दिया था आपको मैंने OnePlus One का, राइट इन द बिगनिंग, याद करिए, उस टाइम पे जब वो फ़ोन निकला था ना, नो वन डेयर्ड आंसर द OnePlus चैलेंज. वो ट्रू फ्लैगशिप किलर था एट अ फ्लैगशिप किलर प्राइस. इट वॉज किंग. लेकिन अब चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं. OnePlus ने लॉन्च किया है what they call a flagship killer, and there are now so many other players who launch flagship killers. There are so many more players offering similar specs and performance and optics and looks. मुझे ये सवाल बार बार पूछा जाता है, इज द OnePlus Nord द बेस्ट फोन एट 25,000 रुपीज? आज मैं इस सवाल का जवाब आपको यहाँ पे देने वाला हूँ. इट्स अ बिग वन and it needs a big answer. First, let's take a brief look at the top other phones that compete with the Nord, keeping in mind that the OnePlus Nord starts at 24,999 for the base 6GB RAM variant. शुरू करेंगे अपनी जर्नी विद द Realme X3 एंड द X3 Super Zoom. दोनों फोन्स जो हैं are running on Snapdragon 855 Plus, which is a faster chipset. फिर स्टोरेज ऑप्शंस जो हैं UFS 3.0 हैं, so you get faster data transfer speeds. आप ये भी अप्रिशिएट करेंगे faster refresh rate of 120 Hz with these phones on the screen. And where they really take the cake is in fact in the camera department. दोनों phones में हैं जो main base है 64 megapixel main camera है, and both of them boast a lot about their zoom capabilities.
Now, I'm not saying कि 20x hybrid zoom जो है X3 पे बहुत अच्छा है, 60x super zoom on the X super zoom are very high quality. In fact, they are not. They are quite bad at that zoom. But मैं ये कह रहा हूँ कि जो 8 megapixel periscope zoom है on the X3 super zoom, that has 5x optical zoom and it is optically stabilized. And the prices of these two phones are not too far away from the Nord either. The problem is that these are Realme phones. यहाँ problem शुरू होती है. Experience, UI, bloatware completely kills the experience. It's nowhere near the OnePlus feel. That is very superior. Number 2. Probably the best and most striking looking phone when we are comparing, especially the red color one. अगर आपको चाहिए ना, you want something that catches the eye, this is the one. ये है Eye Candy Redmi K20 Pro. It's not just about the looks. It runs on the Snapdragon 855, has a 20 megapixel pop-up selfie camera. इसका मतलब है the AMOLED display has no notch or dot or cutout at all. Average camera है इसमें. It offers a 48 megapixel main camera, 8 megapixel telephoto camera, 13 megapixel super wide angle camera as well. But performance of the camera not so good. ये phone was really lapped up by gamers क्योंकि it offered excellent performance at this price. I'm very happy that it has an audio jack also, so you can get good quality audio with the headphones you already own. लेकिन फिर से it's a Mi phone and the Mi UI is a disaster of epic proportions. You can't spend big bucks and get big bloatware and ads. Wake up Xiaomi, बंद करो इस बकवास को अब. चलते हैं थर्ड फोन पे. ये जो ऑप्शन है थोड़ा सा प्राइसियर है but has an overall really nice feedback from users. It's again a Realme device, Realme का X2 Pro. You're again looking at a device running on the Snapdragon 855 Plus. You're again looking at a device with a quad cam setup on the back. And yes, 3 practical lenses that actually work. They are the 64 megapixel main sensor, 13 megapixel telephoto lens and the 8 megapixel wide angle lens. Fourth basically जो है वो marketing के लिए quad camera कहने के लिए है, डाल दिया है, basically useless lens है. We're also looking at one of the fastest out of the box charging phones. ये supplied है with a 50 watt charger that tops up the 4000 mAh battery in anywhere between 30 to 40 minutes. और ये सब कुछ ये कर लेता है while keeping the 3.5 mm headphone jack right there. That's a big deal. But फिर से वही बात, Realme का UI है, it still has a bad UI, not a good feeling at all. अब आता है एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर. OnePlus Nord में है 5G, जबकि जितने भी मैंने आपको बाकी फ़ोन्स बताए हैं उसमें 5G नहीं है. इसका मतलब Nord फ्यूचर रेडी है. प्लस OnePlus Nord का एक्सपीरियंस, UI, लुक, फील एंड जस्ट व्हाट ओनिंग अ OnePlus डज फॉर द हार्ट एंड द माइंड, द OnePlus Nord डज विन दैट बैटल. बट इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक दिस डिबेट फर्दर. अगर आपके पास ना, जो भी मैंने Nord के साथ कंपेयर करने हैं, जो भी डिवाइसेस मैंने आज बात की है, अगर आपके पास वो डिवाइसेस हैं, can you help me with your experience? How have these phones aged? आपके पास phones काफ़ी टाइम से हैं, कैसे हैं? Are you happy with these phones? कि ये सिर्फ एक specs की गेम है जो खेली जा रही है and the consumer experience is just not there. After all, 25,000 और so की जो market है ना, बहुत ही important market बन रही है. So tell me all that you know. Basically जो है, मैं आपको recruit कर रहा हूँ to join my research team. Let's do this together. And of course, let's do one more thing together. Subscribe to Tech Magnified and I'll see you in the comment section.